ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରୋଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ହାଇ କମିଶନର ରୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପସିବଲି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିବେ, ଭାଇଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହିଂସା ପରସିକ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାସନ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଦ ମିଆଁମାର ଫ୍ରମ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ନେଚର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରିଲି ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ନୁହଁ, ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ନେଚର ମାନେ ମାନବିକତାବାଦୀ। Actually, India Pakistan division after independence, crores, lakhs and crores people refugee displaced India and Pakistan. So providing international protection. So core functional role of United Nations High Commissioner. It is political science, OPSC, OS men's civil service men's. Providing international protection. International protection दिया प्राइमरी फंक्शन टू सेफगार्ड कर राइट एज वेल एज बिंग रेफ्यूजी मानक राइट अधिकार वेलबिंग भल मंद वेलबिंग दिस इनवॉल्व्स एरा इनवॉल्व कर प्रमोटिंग सुपरवाइजिंग कर इंटरनेशनल कन्वेंशन को इनवॉल्व इट दिस इनवॉल्व्स प्रमोटिंग वृद्धि कर सुपरवाइजिंग कर निरीक्षण इंटरनेशनल कन्वेंशन सच आज 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन रिफ्यूजी मान गोटे कन्वेंशन होता 1967 प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल होता हूँ डिफाइन रेफ्यूजी राइट्स हूँ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट देम स्टेट हूँ बाध्य ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट रक्षा करियो इंश्योरिंग राइट टू असाइलम माने रहिया पे राइट दो शेल्टर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट हाई कमिशनर एडवोकेट करते फॉर द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू सीक असाइलम पाइबो जेकोसी व्यक्ति राइट अधिकार होची असाइलम पाइबो एनसोर्स करे द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल मौलिक नीति व्हिच फॉर मना करिवो रिटर्निंग ए पर्सन टू ए कंट्री वेयर दे वुड फेस डेंजर और परसिक्यूशन व्हिच फॉरबिड मना करिवो रिटर्निंग मना करिवो फेरेबा को पर्सन टू ए कंट्री को वेयर दे वुड फेस डेंजर और परसिक्यूशन जो जीवन प्रति लाइफ इन डेंजर और परसिक्यूशन निर्वासन वासन मना करिवो रिटर्न करिया को पर्सन को टू affected country victimized country fundamental principle for non refoulement is upheld assistance emergency assistance और सहयोग सुजोग सब दिया जीवो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस समय रे यूएनएचसीआर कोऑर्डिनेट करूची जाति संघ समय कोऑर्डिनेट करे समन्वय रक्षा करे कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन एड जीवन बचापी जो मानविकता एड साहाଯ୍य इंक्लूडिंग शेल्टर फूड घर फूड खाद्य वाटर मेडिकल केयर ऑफर इन पार्टनरशिप विथ गवर्नमेंट एंड एनजीओ गवर्नमेंट और एनजीओ मिसिक सब ये सब करते यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूजी मान सिकिंग ड्यूरेबल लॉन्ग सॉल्यूशन चाहती परमानेंट सॉल्यूशन ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैंडेट इज टू वर्क विथ होस्ट कंट्रीज सहित जो कंट्री सब रहती the international community to find a long term solution for displaced people मान पाई this solution can include voluntarily स्वेच्छाकृत भावे to their home country की जानते when it's safe voluntarily repatriation to their home country when it's safe integration into the host community resettlement in a third country resettlement this solution can include voluntary repatriation to their home country जानती जिया पे host country सहित टू काम करती and the international community to find long term solution for displaced people मान पे this solution can include voluntarily repatriation to the home country की when it's safe तो निरापद हुए इंटीग्रेशन अखंडता इनटू द होस्ट कम्युनिटी मान पाई जो मैंने रिटर्न करते और रिसेटलमेंट होती इन थर्ड कंट्री रे अन्य राष्ट्र एड्रेसिंग स्टेटलेसनेस द मैंडेट्स आल्सो एक्सटेंड करे आइडेंटिफाई करे द प्रिवेंटिंग प्रतिरोध करे एंड रिड्यूसिंग
स्टेटलेसनेस थी राज्यहीन एज वेल एज प्रोटेक्टिंग स्टेटलेस पर्सन को बाय वर्किंग विथ गवर्नमेंट काम करे टू एनश्योर दे आर ग्रांटेड नेशनलिटी पाइबापी एंड एक्सेस टू द बेसिक राइट्स पाइबे बेसिक राइटा केमती एक्सेस करेंगे ग्रांटेड नेशनलिटी केमती पाइबे एनश्योर दे आर ग्रांटेड नेशनलिटी स्टेटलेस पर्सन बाय वर्किंग विथ गवर्नमेंट सहित काम करती टू एनश्योर हाँपाई श्योर हाँपाई श्योर एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग द हाई कमिशनर एडवोकेट करते फॉर द इंक्लूजन ऑफ रेफ्यूजी मान इंक्लूजन अंतर्भुक्ति करने अंतर्भुक्तिकरण एंड डिस्प्लेस पर्सन माने डिस्प्लेस पर्सन होता इन नेशनल डेवलपमेंट प्लान रे एंड सिस्टम्स हेल्थ केयर एजुकेशन एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस दियंती टू कंट्रीज इन फ्रेमिंग देयर ओन रेफ्यूजी मानकू एंड असाइलम घर लॉज पॉलिसीज इन लाइन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड मानक अच्छे से अनुजाई प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस कंट्रीज फ्रेमिंग ओन रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉज सब दियंती असाइलम लॉ पॉलिसी लाइन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सहित कोऑर्डिनेशन ग्लोबल रेस्पॉन्स ग्लोबली कौन सब करती यूएनएचसीआर लीड्स से कोऑर्डिनेट करे ग्लोबल रेस्पॉन्स माने विश्वर वैश्विक रेस्पॉन्स टू रेफ्यूजी सिचुएशन पाई दायी रेस्पॉन्स माने दायी involving the wide range of stakeholders including government other UN agencies and non-government organizations UNHCR leads a coordinate करे global response to refugee situation पाई परिस्थिति पाई involve हुए a wide range of stakeholders including government stakeholders माने जो माने third party माने sponsor including government other UN agencies non-government organizations NGO they incessantly continuously working for the refugee analyze करो concept of collaborative security एटा OS means political science political science concept of collective security माने समष्टिगत security and explain its significance एवं तार यथार्थता and drawbacks एवं तार असुविधा कौन collective security collective security होची international system where all participating state agrees where all participating state माने participate करते राज्य agree that an armed attack against one member armed attack करती one member is an attack against all जन member is an attack against all समस्त के विरुद्ध रे committing them to collective action नियंती टू स्टॉप द अग्रेशन collective security अर्थ होची इंटरनेशनल सिस्टम वेयर ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो माने पार्टिसिपेट स्टेट माने collective security पई इंटरनेशनल सिस्टम रे वेयर ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट एग्री राज्य दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन मेंबर विरुद्ध रे जो आर्म्ड अटैक हबो इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एटा फंक्शन ऑफ collective security जोटा NATO and NATO armed attack against one member विरुद्ध यदि हम ये attack against all committing them to collective action नियंती to stop aggression को बंद करने पे it is device for crisis management संकट मैनेजमेंट पे that aims to deter aggression by creating a global power against and potential aggressor effectively operating currently on the principle of one for all and all for one for जन पाई समस्ते and all for one जने समस्ते जन पाई एग्जांपल होची कोन नाटो अमेरिका and with European countries if the attack in Russian world is divided between two powers so got Cold War and NATO Russia and his allied countries, the Warsaw Pact, and America and his allied countries, NATO, North Atlantic Treaty Organization. If any countries attack upon the NATO, all consider attack upon all the countries. All countries collaboratively fight with the enemy countries. Significance collective security significance अर्थात कौन प्राइमरी गोल होची
potential aggressors, potential credible threat, विश्वसनीय threat माने भय of overwhelming, universal force from the international community to preventing the outbreak of war, रोकिबे outbreak of war, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ outbreak ହବାରୁ ରୋକିବେ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗ୍ରେସର ୱିଥ୍ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଥ୍ରେଟ୍, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଫର୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରକ୍ଷା କରିବ, ଇଟ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ଆସ୍ୟୋର କରିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ନେସନ୍, ସବୁ ଦେଶର ସିକ୍ୟୁରିଟି, particularly benefiting smaller and poorer countries, ଛୋଟ ଆଉ ଗରିବ ଦେଶକୁ that may not have the capacity to defend themselves alone, ଏକୁଟିଆ capacity ନଥାଏ to defend କରିବା ପାଇଁ themselves ଏକୁଟିଆ, every nation ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ aims to assure କରିବା ପାଇଁ, particularly benefit କରନ୍ତି ସ୍ମଲରକୁ ଆଉ poorer countriesକୁ, may not have capacity to defend କରିବା ପାଇଁ themselves alone ଏକୁଟିଆ, reducing their needକୁ reduce କରନ୍ତି ସେମାନେ, to engage in arms races ରେ, reducing need of engage in arms races ରେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରେସ୍ ପାଇଁ, or form exclusive alliance, ତେଣୁ alliance ଗଠନ କରନ୍ତି। significance and drawbacks କ'ଣ? promotion of cooperation and international law, ପ୍ରମୋଶନ କରନ୍ତି ସହଯୋଗିତା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ, ସିଷ୍ଟମ institutionalize ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାୱାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲାଇକ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଭଳିଆ, ଫୋଷ୍ଟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମାସି କୂଟନୀତି, କୋପରେସନ ସହଯୋଗ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଓଭର ୟୁନିଲାଟରାଲ ଆକ୍ସନ, ତେଣୁ ଫର୍ମେସନ ଅଫ୍ କୋପରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲକୁ ସେମାନେ ଓବେ କରିକି ଆଲିଆନ୍ସ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲାଇକ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍, ତେଣୁ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଫୋଷ୍ଟରିଂ ବଢ଼ାନ୍ତି, କୂଟନୀତି ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଫାଇଟିଂ, କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜମ୍, କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସଚ୍ ଆଜ୍ ୟୁନିୟନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ୟୁଏନ୍ର, ଫର୍ ଆଡ୍ରେସିଂ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଭୟକୁ ଟୁ ପିସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମେଜର୍ସ, ଫର୍ ଆଡ୍ରେସିଂ ଥ୍ରେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି କହନ୍ତି ଥ୍ରେଟ୍ସ ଭୟ, ଟୁ ପିସ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଫ୍ରମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଟୁ ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍, from economic any जो aggressive country economic sanction to military intervention, military international of peace mission as laid out chapter VI of UN charter 7 of the UN chapter 7, universality अर्थ होची कोन universality विश्व, universal अर्थ होची विश्व, सारा विश्वकरण, यूनिवर्सल स्कोप मीनिंग एनी अग्रेसर अगेंस्ट एनी विक्टिम टा माने विक्टिम कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड should theoretically face a united international response in contrast to selective interest based military alliance of नियंती, यूनिवर्सलिटी माने मीनिंग अग्रेसर अगेंस्ट मीनिंग एनी अग्रेसर अगेंस्ट विरुद्ध रे any victim माने victim country anywhere in the world should theoretically face करे united international response, आंतर्जातिक इंटरनेशनल एकाठी होइथिबा इंटरनेशनल रेस्पॉन्स इन कंट्रास्ट टू सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेस्ड मिलिटरी अलायंस मिलिटरी सहयोगिता। ड्रॉबैक कौन? ड्रॉबैक होची चैलेंजेस, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द अग्रेसर, केम चिन्ह डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करिया अग्रेसर किए, अग्रेसर कंट्रीज किए, challenges it can be extremely difficult to quickly
शीघ्र एंड क्लीयरली डिटरमाइन करने आग्रेसर इन ए कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व एज ए बोथ साइड्स ऑफन क्लेम सेल्फ डिफेन्स उभय पक्ष चाहती सेल्फ डिफेन्स आत्मरक्षा लीडिंग टू डिले और पैरालाइज एक्शन लेट करने और पैरालाइज एक्शन को ड्रॉबैक्स प्राइमरी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट मेंबर ऑफ स्टेट ऑफन प्रायोरिटाइज दियंती देयर ओन प्रायोरिटाइज दियंती ओन नेशनल इंटरेस्ट को ओवर abstract commitments to international peace अगर ओन नेशनल इंटरेस्ट को दियंती rather than international peace अंतर्राष्ट्रीय शांति पाई लीडिंग टू ए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इच्छा थाए अभाव रही टू इंटरवीन इन कॉन्फ्लिक्ट रे इंटरवीन करने पॉलिटिकल विल अभाव था इच्छा दैट डोंट डायरेक्टली अफेक्ट देम डायरेक्ट अफेक्ट तक करेनि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स एंड द भेटो Power politics means decision in the United Security Council is the primary body for collective security. मुख्य body for collective गोष्ठीगत security action can be blocked by the veto power द्वारा ब्लॉक की जाए of any of the 5 permanent members द्वारा. The primary body of collective security action गोष्ठीगत collective security action. This has historically paralyzed करचे action during the Cold War समय रे यही सब पैरेलल कर दो जो भेटो पावर सिक्योरिटी ब्लॉक कर दो भाई तो भेटो पावर ऑफ एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स करो जेको परमानेंट मेंबर ऑफ भेटो पावर द्वारा ड्यूरिंग द कोल्ड वार कंटिन्यूस टू लिमिट कर देछि इफेक्टिवनेस कार इफेक्टिवनेस ऑफ द इफेक्टिवनेस से जो प्रभावटा व्हेन परमानेंट मेंबर ऑफ और इट्स परमानेंट मेंबर और इट्स आली इज इनवॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट यदि परमानेंट मेंबर और तार आली सहयोगी इनवॉल्व रहती कॉन्फ्लिक्ट रे तेणु पैरालाइज हो एक्शन ड्यूरिंग द कोल्ड वार समय कंटिन्यूस टू लिमिट हो इफेक्टिवनेस कौन ये जो इंटरनेशनल पीसी डिसीजन इन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ब्लॉक्ड एनी कलेक्टिव सिक्योरिटी बा गोष्ठीगत संघर्ष दैट विल बी पैरालाइज हो दैट विल बी ineffective हो if सिक्योरिटी काउंसिल भेटो नेशन एंड इज आली युद्ध व्यस्त था इनवॉल्व कॉन्फ्लिक्ट था रिस्क एंड एस्केलेशन कलेक्टिव रेस्पॉन्स रही बाय मेनी नेशंस कुड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म रिस्क होची ट्रांसफॉर्मिंग लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट इनटू वाइडर ग्लोबल वार इन्वॉल्विंग न्यूमरस इंटरनेशनल एक्टर्स रिक्स कलेक्टिव रेस्पॉन्स जो एकाठी हुआ मेनी नेशन कुड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म ए लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट यदि गोटे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे इंटू वाइडर हो बड़ हो ग्लोबल वार हो आइडियलिस्टिक एजम्पशन माने क्रिटिक्स आर्ग्यू करते सिस्टम इज बेस आइडियलिस्टिक एजम्पशन वास्तववादी एजम्पशन निर्णय तथ्य सिद्धांत एजम्पशन दैट ऑफन नॉट मेट इन द रियल वर्ल्ड रे such as assumption that all nations will agree on the nature राजी हेबे nature of the threat भय and willing to bear the cost of collective action willing इच्छा करिए to bear the cost of collective action collective action पाई there all nations will agree हेबे on the nature of threat भय जोगु and be willing have राजी to bear the cost of collective action cost सही logistic and implementation challenges logistic absence of permanent standing UN military forces के ना कि standing military forces armed forces means the assembling a collective force after aggression पर occur is slow और difficult होची This means assemble a collective force that aggression after aggression pare giving the aggressor time to consolidate gains. So UN permanent council in security council has no any UN military force or paramilitary force or any security forces permanently. That is why lingering or hacking of
Some drawbacks of Military Security Council.